I think the time was over, that is why the connection was lost. So we will wait 1 minute so that everyone can join, and then we will resume our discussion. Okay, ma'am. Anyone is coming? Okay, they're coming. 15. So up to where were you able to see? कहाँ पे खत्म किया था लास्ट में? प्लीज रेस्पॉन्ड. कहाँ तक तुम लोगों को सुनाई दिया था? मैम और सा पहले कीजिए ना, थोड़ा जोर से. थोड़ा सा पहले कीजिए ना मैम. और थोड़ा सा पहले. यस अच्छा, कहाँ से बोलो? इक्वेशन 5. यस हाँ मैम, यहाँ से ये बता दी थी आप. यहाँ से ना? और नीचे इक्वेशन 7-8 का रिलेशन बता रही थी. अच्छा, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ. यस मैम. So we got on the left hand side we have the rate of absorption. On the right hand side we have the rate of emission. The rate of absorption was given by B1 to N1 into the energy density UF, where on the right hand side we have two parts. The first part is for spontaneous emission and the second part it is for stimulated emission. Okay. So from here we get the formula for energy density UF in terms of A, B and N1, N2. तो इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो तुम्हें दूसरा वाला इक्वेशन मिलेगा. इक्वेशन 1 को थोड़ा रीअरेंज करने से हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 2. Okay, where we get the energy density UF is given by A21 by B21
divided by B12 N1 by B21 N2 minus 1. Now, according to Boltzmann distribution law, the number of atoms present in the level E1 is given by N1 equal to N0 e to the power minus E1 by KT. Similarly, N2 is the number of atoms present in the level with energy E2, and it is given by N2 equals to N0 e to the power minus E2 by KT. Now, if you do N1 by N2 from here, N1, N0, N0 cancels out, and we get it is equal to e to the power E2 minus E1 by KT. Now, E2 minus E1 but is nothing but H into F, where F is the frequency of radiation. So, we can write N1 by N2 equals to e to the power HF by KT, the equation number 6. Now we will put it in equation number 2 here. यहाँ पे N1 by N2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा UF equals to A21 by B21 UF equals to A21 by B21 divided by B12 by B21 e to the power HF by KT minus 1. Now we will compare this equation with Planck's radiation formula. प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला तुम लोगों ने ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है, जहां से हमें मिलता है कि द एनर्जी डेंसिटी फॉर ए फ्रीक्वेंसी एफ UF is given by 8 pi h f cube by c cube 1 by e to the power hf by kt minus 1. अभी इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7 का कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा A21 by B21, this one is equal to 8 pi h f cube by c cube and e to the power hf by kt का कोएफिशिएंट है B12 by B21 और यहाँ पे है 1. So we can write B12 has to be equal to B21. So यहाँ से क्या हम conclude कर सकते हैं that ratio of spontaneous to stimulated emission is given by N2 A21, this is the rate of spontaneous emission, divided by N2 B21 UF, that is the rate of stimulated emission. तो यहाँ से मिलता है हमें this is equal to A21 by B21 into UF, because N2 N2 cancels out and A21 by B21 का वैल्यू यहाँ से मिलता है, तो we will put it here. So we see that the rate ratio is proportional to F cube or the frequency cube. तो frequency जितना ज़्यादा होगा spontaneous emission का rate उतना बढ़ेगा, stimulated emission का rate घटता जाएगा. And और एक मिला है हमें B12 is equal to B21, that is the coefficient for stimulated absorption is equal to the coefficient for stimulated emission. So we get this through these two things. तो अभी इक्विलिब्रियम में हमें देखने को मिला कि the rate is proportional to frequency cube. तो इक्विलिब्रियम में तो लेजर एक्शन नहीं मिल सकता क्योंकि नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन और नंबर ऑफ rate of emission is equal to rate of absorption. So to get a laser action, we need to get the emission rate high first of all. अभी emission rate high तो ऐसे नहीं होगा, because the emission rate depends on the number of atoms present in the higher energy state or the excited state. So, in general, according to Maxwell-Boltzmann law or the Boltzmann distribution, we know that N2 is equal to N0 into e to the power minus E2 by KT. Now, if E1 is less than E2, E2 मतलब higher energy state. Higher energy state में number of particles
generally कम रहता है because of this Boltzmann distribution law. तो हमें क्या करना है, हमें हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाना है. तो ये तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वी हैव टू डू इट आर्टिफिशियली. द phenomena when the number of atoms present in the excited state is greater than the number of atoms present in the ground state. This is known as population inversion. तो पॉपुलेशन जनरली नीचे के लेवल में ज्यादा होता है, इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं उसे ही पॉपुलेशन इन्वर्शन कहते हैं. इसी की वजह से लेजर एक्शन पॉसिबल है. नाउ पॉपुलेशन इन्वर्सन तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल और द एक्साइटेड स्टेट, उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 8 second, as I already said. So we need a third level called the metastable state, which is in between the excited state and the ground state. तो उसका लाइफ टाइम भी, as the name suggests, it is between the excited state and the ground state. ground state में तो हमेशा ही रहता है. एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम मैंने कहा 10 to the power minus 8 सेकेंड है, whereas the metastable states they have a life time of 10 to the power minus 3 सेकेंड, मतलब 10 to the power 5 times higher than the excited state. तो जनरली एक्साइटेड स्टेट से एटॉम्स डी एक्साइट होके एनर्जी लूज करके मेटास्टेबल स्टेट में आके जमा होता है. एंड एज ए रिजल्ट मेटास्टेबल स्टेट में धीरे धीरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता जाता है. एंड फाइनली आफ्टर अ सर्टेन टाइम we get the population inversion at the metastable state with respect to the ground state. और population inversion पाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पंपिंग कहते हैं. पंपिंग वेरियस तरीके का होता है, डिफरेंट तरीके का. One of them is called optical pumping. Optical मतलब, as the name suggests, light is used to excite the atoms from ground state to highly energized excited states. So there are various methods called optical pumping, electrical discharge, direct conversion. So optical pumping में we use light to energize the atoms. So pumping is basically nothing but giving energy to the system. So these are methods, various methods. तो ऑप्टिकल पंपिंग में लाइट यूज होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में यू यूज हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली देयर आर केमिकल पंपिंग, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से कोई एनर्जी होता है उधर, मतलब energy is released because of the chemical reaction and the system is energized to higher levels. So there are different mechanisms of pumping. One of them is optical pumping. Optical pumping is used in ruby laser. So our aim is to increase the population of the electrons in the metastable state through pumping. Now, how the laser system works, that will be our next discussion. So, we will directly go to the ruby laser. First of all, we need to know what a ruby laser is. So ruby laser is basically ruby crystals, which is Al2O3 or alumina crystals, where chromium plus 3 ions are doped by 0.05% of weight. So these
you have already seen, some of you may see ruby crystals. They are gemstones basically. So the color is red, and the red color comes because of the chromium atoms. तो chromium atoms में एक लेवल से दूसरे लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, एंड द लाइट जो एमिट होता है वो रूबी लेजर का लाइट है. तो we will go to the, so ruby laser is basically characterized by pink or red color, and it absorbs green and blue light. ग्रीन एंड ब्लू लाइट एब्सॉर्ब करता है और पिंक और रेड छोड़ता है. इसका मतलब समझ में आया? ग्रीन एंड ब्लू का वेवलेंथ है ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रीन का 5000 आई थिंक, whereas for red it is of the order of 6500. तो ये ज्यादा एनर्जी लेता है. फिर इसके बीच में कुछ होता है. we will go to the mechanism in details, and then it releases some amount of energy. The color is red. So ruby laser is a pulsed laser producing a red light at 694.3 nanometer or 6943 angstrom. Now we will see how the ruby laser works. So look at the picture carefully. So here the pink rod, it is basically the ruby rod. So first I will tell you the mechanism. Acha, can you see me? Yes or no? I cannot see myself. Hello everyone. Can you see me? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes or no? No, I ma'am. cannot see myself. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. no, No, ma'am. ma'am. Now can you see me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The video was stopped anyhow. Now you can see me and the picture both. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So look at the ruby rod. The pink rod is the ruby rod. I will tell you the mechanism first for the basic principle how a laser works, and then I will tell you how the ruby laser works. So for a laser system, we have some components. It is already given in my note. First we need a laser active medium. तो जिस मीडियम में और जिस मीडियम के ट्रांजिशन की वजह से हमें लेजर लाइट मिलता है, तो दैट मीडियम इज नोन एज द लेजर एक्टिव मीडियम. In this case it is the ruby rod, or you can say it will be the chromium ions of the ruby rod की वजह से हमें लाइट मिलता है. Then we have to give some amount of energy from outside, which is the pumping mechanism. तो पंपिंग करेंगे तो the atoms in the ground state of the laser active medium, they will go to the excited state. रूबी लेजर के लिए हम ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं बाय xenon फ्लैश ट्यूब. यहाँ पे ये जो स्पाइरल करके ट्यूब दिखाई दे रहा है, इट इज अ xenon फ्लैश ट्यूब. यहाँ से हम xenon लाइट फ्लैश करते हैं. xenon लाइट है एक ब्लू ग्रीन और ग्रीनिश येलोइश एक लाइट है. So as we already discussed, it absorbs green yellow radiation. So we are using optical pumping in case of ruby laser by xenon flash. तो xenon flash कर दिया.
मतलब वो ऐसे ब्लिंक करते करते फ्लैश करता है. दैट इज व्हाई रूबी इज आल्सो ए पल्स्ड लेजर, रूबी लेजर. तो एक बार फ्लैश किया, इलेक्ट्रॉन्स लोअर लेवल से हायर लेवल में चला गया रूबी रॉड में. ओके, तो now we need population inversion. So for population inversion, I already said we need a metastable state, जो कि हमें मिलता है रूबी में. So we have a 3-stage energy diagram, this one. Okay. तो क्रोमियम आयंस जनरली जेनॉन में ग्रीन लाइट एब्सॉर्ब करता है. ग्रीन लाइट एब्सॉर्ब करके ये ग्रीन लेवल पे और द एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. उसके बाद ये कैसे भी करके नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस करके ये मेटास्टेबल स्टेट में आके जमा होता है. तो मेटास्टेबल स्टेट में जितना ज्यादा जमा होगा, so after a certain time it will achieve population inversion in the metastable state with respect to the ground state. तो यहाँ पे population inversion achieve हुआ. Now अभी क्या होगा? Now we will go back to the previous picture. So atoms are there in the metastable state, and the ground state we have less population compared to the metastable state. तो population inversion achieve हो गया. अभी हमारा काम है stimulated emission को लाना. लेकिन stimulated emission के लिए we need a photon of that particular frequency जिसका एनर्जी होगा वो मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर. तो वो तो ऐसे तो नहीं मिलने वाला. सो द फर्स्ट ट्रांजिशन इज ऑलवेज द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. तो मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहले एक स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है. सो वी गेट one photon of frequency or of wavelength 694.3 nanometer. अभी ये फोटोन क्या करता है? This photon it stimulates the other radiation. तो अभी ये अगर stimulated emission करेगा, so next जो फोटोन निकलेगा उसका डायरेक्शन, frequency, amplitude, everything will be same with the incident photon. So एक बार एक फोटोन निकल गया, उसके बाद एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है. तो एक फोटोन से दो फोटोन, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बहुत सारा फोटोन्स निकलता है which have the same frequency, same direction, same phase, everything same, and as a result we get a high intensity. Now अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें? हमें लेजर लाइट चाहिए along the axis of the ruby rod. वहां पे इधर से निकलता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन तो हमारे हाथ में नहीं है. वी कैन नॉट कंट्रोल देम. इसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है. इट कैन बी एनी डायरेक्शन, इट कैन बी ऑफ एनी डायरेक्शन. ये इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकते हैं, कोई भी तरफ जा सकता है. तो इसको यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए हमें 2 मिरर चाहिए. यहाँ पे हमने 2 मिरर यूज किया है. वन इज द पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर हियर, एंड हियर ऑन द opposite side we have a totally reflecting mirror. These mirror they form a optical resonator. Optical resonator का 2 काम होता है. The first thing, उसको डायरेक्शनल बनाना. तो लाइट
ओनली टू एंड फ्रो ट्रैवल कर सकता है अंदर इनसाइड द लेजर एक्टिव मीडियम। बाकी कोई भी तरफ अगर जाएगा तो वो इधर से बाहर निकल जाएगा। So only those photons which travel to and fro along the axis of this ruby rod, they get reflected। तो यहाँ suppose एक photon generate हुआ and it is moving along the x axis। तो ये x axis बराबर move कर रहा है, इस सरफेस पे आके वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और इस तरफ जाएगा। इन द मिड वे ये जब जाएगा तो बहुत सारा एटॉम्स के साथ इसका एनकाउंटर होगा, which will be in the excited state। As a result, more number of photons will be generated and they will have the same direction as the incident photon। तो ये रॉड के अंदर जितना ट्रैवल करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। So we will have only the photons which travels move to and fro along the direction of the axis of the ruby rod। बाकी तरफ जो भी फोटोन जाएगा वो इधर से निकल जाएगा रूबी रॉड के। So this is the aim of having two mirrors on the two opposite sides of the ruby rod। So ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा और ऐसा करता जाएगा। करते करते एक टाइम बाद the intensity will be too much high so that some part of the light it will emit through the partially reflecting mirror here। समझ में आया? और बाकी का सिस्टम में फीडबैक हो जाएगा। अगर समझ में आया है तो बोलो, नहीं आया है तो भी बोलो, प्लीज रेस्पॉन्ड। कैन यू हियर मी? प्लीज रेस्पॉन्ड। यस मैम। समझ में आया? Yes or no? Please respond। अगर फिर से बताना हो तो बताओ, मैं बताऊंगी। But you have to respond, otherwise how can I know कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं। अच्छा, I am assuming that समझ में आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। So as I said, these two mirrors have two functions। One is to make the laser beam directional and the second one, it is more important, is to select the frequency। That is why this is called optical resonator, these two mirrors। Now if two waves they superpose in opposite direction, two waves going in opposite direction, if they superpose, what will form? दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में सुपरपोज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? स्टेशनरी वेव्स। एंड द स्टेशनरी वेव्स दे विल हैव सर्टेन फ्रीक्वेंसी। कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता। अच्छा, ये कौन ड्रॉ कर रहा है? इधर ब्लू लाइन ड्रॉ कर दिया। अच्छा, जिसने भी ड्रॉ किया इसे मीटा पहले। So the optical resonators have one more thing or one more function. They select the frequency of the output। As I said कि कोई भी frequency इधर नहीं रह सकता है।
so it will depend on the length. ये तो ऑलरेडी तुम लोगों ने बहुत सारे क्लासेस में किया है कि कौन सा हो सकता है. Stationary waves, the first vibration or first mode of vibration will have lambda equals to L by 2. Sorry, L equals to lambda by 2. This length is L, so the wavelength will be L equals to lambda by 2. The second mode of vibration we will have here. Okay, one more. So if we have a box like this, तो पहला वेव हो सकता है ऐसा, the first mode of vibration. Second mode of vibration can be like this. The third mode of vibration can have 3 half waves like this. The third mode of vibration can be like this. So we have 3 half waves inside this L length, similar and so on. So changing the length L, we can select the modes of vibration. Now if we go back to the picture, here, so these are the modes of vibration, or these are the modes allowed by the length L, and this is the natural frequency of the laser action. कोई मैंने कहा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप जब करेगा, we will not have a single line, we will have a Gaussian like or this kind of wave, because the state are not linear. In fact, they are bands. एक band से दूसरे band तक जब जाएगा, we will have a spread in the wavelength which is given by this. अभी इन दोनों का अगर तुम combination लोगे, so it will have only some selected range of frequency. So optical resonator, it also select which frequency range is coming out of the laser active medium. So this is how a laser system works. Okay, so क्या हुआ? पहले energy दिया by xenon flash, it goes to the excited state, then it goes to the metastable state by releasing some amount of energy which is radiation less transition. फिर metastable state में population inversion achieve किया. Population inversion achieve करने के बाद we will have the first emission as spontaneous emission. Then एक spontaneous emission जब हो जाए, that photon, it will trigger other radiations or other emissions which will be stimulated emission. The direction, frequency, amplitude, phase of the stimulated photons, those will be same as the incident photon or the first photon. Now we have to make it directional, and we make
it directional by two mirrors. One is partially reflecting mirror, one is totally reflecting mirror. These mirror, they make the photons go to and fro along the axis of the crystal, axis of the ruby crystal. And all the photons which go on other directions, they are emitted by the surface of this ruby crystal. Only the photons which move along the direction of the axis of the crystal, they stay inside the medium and they are reflected back by the two mirrors, and the number of photons along this axis increase gradually. After a certain time, the intensity becomes too high and we get a laser beam, or one portion of that beam is released along this axis or along this direction. Remaining part gets feedback into the medium and this process goes on. Okay, this is how ruby laser works. Now we have another laser, which is the helium neon laser, which is a gas laser. Helium neon laser में क्या होता है? We have helium and neon gas here. और यहाँ पे pumping mechanism है by electron discharge. तो highly energized electrons, they energize the helium atoms first. The helium atoms, they collide with the neon atoms and we get the neon atoms energized. Mainly यहाँ पे जो laser हमें मिलता है, that is because of the transitions of the neon atoms from 2p level, sorry, from 3s level to 2p level. तो बाकी का mechanism same है, difference है only the pumping में and the, in case of ruby laser we had two reflecting mirrors. Here we will have two Brewster's windows. Acha, we are running out of time. I will need 10 more minutes, so we will take a break of 5 minutes, then join. Okay, so in the meantime, someone please take a screenshot of the participants and send it to the group. Okay, so give your attendance in the group and meet me after 5 minutes.